अच्छा जी, अभी तक हमने आईपी टू आईपी इनकैप्सुलेशन की लैब्स की और इसमें हमने V4 into V4, V6 into V4 और V4 to V6 एज वेल एज V6 to V6 इसको अंडरस्टैंड किया। सो बेसिकली जो टनल मोड IPv6 है, दैट अलाउज यू टू encapsulate V4 into V6 as well as V6 into V6। अच्छा जी, if we talk about our lab जो हमने की, एक पॉइंट को रिवाइज करके हम आगे नेक्स्ट टनलिंग टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। यू कैन सी कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है अपने इंटरफेस टनल पे, दैट इज टनल मोड IP और इसके अंदर वी कैन पिंग द अदर साइड्स V4 बट वी कैन नॉट पिंग अदर साइड्स V6 क्योंकि इनपुट पैकेट हमें V4 चाहिए। So if we ping 172.16.1.2, we are able to receive reply from other side. Whereas if we ping FEC0:10::2, we are not able to receive any reply. So in order to encapsulate V6 into V4, we need to convert this mode from IPv6 from IP to IPv6 IP. That we have done already in previous lesson. And likewise अगर हम इसकी type V6 कर लेंगे तो then we need to change the tunnel source and destination altogether और हमें वो V6 यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगर हम इस टनल की बात करें जो हमने अभी तक क्रिएट की है, टनल इंटरफेस टनल 1-2, if I enable CDP on this interface, which is my tunnel interface, and you know CDP is a layer 2 protocol, और इसी तरह यहाँ पर भी हम CDP enable कर दें both ends of the tunnel, so we have actually enabled a layer 2 protocol over the tunnel interface. So after enabling this, if we go for show CDP neighbors, we are not able to see router 2 as a neighbor of router 1, although we have a tunnel in between them, but we are not able to see neighborship. तो ये जो टनल है जो जिसमें हमने टनल का मोड IP रखा हुआ है, IPv6 या IPv6 IP रखा है, clearly this tunneling technique is for IP protocol. This is IP protocol tunneling. It does not support any protocol other than IP. यानी ये जो हमारे राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान टनल इंटरफेस बना हुआ है, we named it T12 here and T21 here. You can only input IP packets. वो अलग बात है कि V4 इनपुट होगा या V6 होगा, that we know from this mode discussion. But we can only input IP and that can be tunneled into this tunnel. Hence, this tunnel, IP tunnel or IPv6 tunnel or IPv6 IP tunnel is purely a layer 3 tunnel. यानी लेयर 3 के प्रोटोकॉल को लेयर 3 के ही गिलाफ में एक दफा लपेटने का नाम है ये, और इनर और आउटर दोनों जो हैं वो IP प्रोटोकॉल है। यानी पैसेंजर भी IP है और पैसेंजर IP की दो टाइप्स हो सकती हैं, बट हैं तो दोनों IP। अब जब हमने इसी टनल के ऊपर CDP एनेबल किया बोथ एंड्स के ऊपर, तो CDP के जो पैकेट्स हैं वो तो लेयर 2 पैकेट्स हैं, दोज पैकेट्स आर नॉट बीइंग टनल्ड अक्रॉस
this encapsulation, that they are not being supported. So we are not able to see any neighbor still from both sides. Anyway, इसी चीज को आगे लेके बढ़ते हैं. Okay, let's move on. And the next type of tunnel we need to study is called GRE tunnel. GRE tunnel जो है, that is developed by Cisco Systems, but nowadays this is kind of an RFC protocol और बाकी vendors भी इसको support करते हैं. GRE stands for Generic Routing Encapsulation. It adds another header in between your inner and outer IP header. यानी GRE ने भी आउटर IP हेडर बिल्कुल उसी तरह लगाने हैं जिस तरह अभी IP in IP encapsulation ने लगाया था, because transit devices को तो सिर्फ ये नजर आता है. So that will be exactly 20 bytes IP header in case of IPv4. बहरहाल इनर हेडर और आउटर हेडर के दरमियान अब एक इजाफी header add किया जाएगा, which will be of GRE. So this time we are going to see a tangible carrier protocol header. So GRE का जब header दरमियान में लग जाएगा, still जो outer header का protocol number है वो set अभी भी किया जाएगा, and that will be equal to 47. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ISP राउटर के अंदर से जो पैकेट्स इन और आउट हो रहे थे उनका प्रोटोकॉल नंबर आउटर हेडर में या तो 4 आएगा या प्रोटोकॉल नंबर आएगा 41 अब, या प्रोटोकॉल नंबर आ जाएगा 47. 47 का मतलब ये है कि जो ट्रैफिक इन और आउट हो रही है ISP के राउटर में से, दैट इज ऑफ GRE कैरियर, यानी इनसाइड इट्स GRE. तो यहाँ प्रोटोकॉल 47 का क्लू मिलने का मतलब है कि इससे आगे पूरा का पूरा जो है वो GRE का एक पेलोड पड़ा हुआ है जिसको कैरी किया जा रहा है. GRE का जो हेडर है दैट इज ऑफ 4 बाइट्स. दिस हेडर इज ऑफ 4 बाइट्स. तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो टनलिंग हमने की थी उसमें जो एक्स्ट्रा बाइट्स ऐड हुए थे इस टनलिंग में वो 20 थे, ये 20 बाइट्स एक्स्ट्रा थे. इस दफा GRE के अंदर ये 20 बाइट्स एक्स्ट्रा तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल उस तरह जो प्रीवियस टनलिंग टेक्निक थी, प्लस इसके अंदर ये 4 बाइट्स एक्स्ट्रा हेडर के अंदर लगेंगे ऑन अकाउंट ऑफ GRE. इन 4 बाइट्स में क्या होगा, वी टॉक अबाउट दैट शॉर्टली. अच्छा जी, GRE जो है उसका जो हेडर है दैट इज ऑफ 4 बाइट्स, but it can go up till 16 bytes if you turn on various different options, optional features. We will talk about those optional features shortly. So minimum GRE का जो header है वो 4 bytes का extra add होगा along with the outer IP header. So total overhead GRE का जो है वो minimum 24 bytes है, whereas IP टनल का जो ओवरहेड है वो 20 बाइट्स का ओवरहेड है. अच्छा जी, GRE कैन एनकैप्सुलेट एनी लेयर 3 प्रोटोकॉल वर्सेस जस्ट IP. इसका मतलब ये है कि GRE प्रोटोकॉल के अंदर आप जस्ट IP पैकेट्स टनल नहीं कर सकते, बल्कि आप कोई भी लेयर 3 प्रोटोकॉल टनल कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ बात की थी. In case of plain IP tunnels, you can only input IP, but in case of GRE, you can input IPX, you can input AppleTalk, you can input any layer 3 protocol in GRE. GRE can encapsulate that. यानी एक ही मोड अगर आप अपनी टनल का सेट कर देंगे, इस टनल का मोड अगर आप GRE सेट कर देंगे, so that tunnel will accept V4 input, V6 input and non-IP packets input as well. CDP includes that.
So an additional checksum can be turned on. checksum we understand, हम अगर अपने पैकेट को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये रास्ते में करप्ट तो नहीं हुआ तो हम checksum का इस्तेमाल करते हैं. सो यूजुअली जो checksum का फीचर है ये हमारे हेडर के अंदर, टीसीपी हेडर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और आईपी वर्जन 4 के हेडर के अंदर अगर स्टडी किया जाए तो इटसेल्फ इसमें भी checksum होता है. तो इसलिए हम इस GRE में अलग से checksum की फील्ड को ऑन यूजुअली नहीं करते, बट इफ वी वांट वी कैन टर्न इट ऑन. इफ यू टर्न दिस फीचर ऑफ checksum ऑन तो आपका 4 बाइट का एक और हेडर में इजाफा हो जाएगा, यानी दिस हेडर ऑफ 4 बाइट्स विल गो अप टू 8 बाइट्स. सो विद checksum योर overhead is going to be 28 bytes. Then if we want, we can turn on another feature which is called tunnel key. Tunnel key is a mathematical value जो दोनों साइड पर मैच करेगी तो पैकेट्स इनकैप्सुलेट और डीकैप्सुलेट होंगे. It is a very weak way of securing your tunnel, a very weak way. और इसके जरिए आप सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और बगैर उस म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के आपकी जो टनल है वो आप नहीं होगी. बट ये जो की वैल्यू है दैट ट्रेवल्स क्लियर टेक्स्ट. सो इसका मतलब है मैन इन द मिडिल के लिए इस की को परसीव कर लेना कोई मुश्किल नहीं है. You can enforce packets. Okay, so if you turn on key feature set in GRE, that adds another 4 bytes. So इसका मतलब है if you turn on checksum as well as key feature in GRE, this header goes up to 12 bytes. So इसका मतलब ये है कि हम 32 bytes के overhead पर चले जाएंगे. So 20 bytes का हमारा outer header वो तो आना ही है, 4 bytes GRE base header, इसके अंदर 4 bytes हमारे checksum के added हैं, and then we turned on key, we went up to 32 bytes. Next feature which we can turn on in GRE is of packet sequencing. So usually TCP में sequencing TCP protocol कर रहा होता है, तो आप इस फीचर को नहीं ऑन करते. बट कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल जो अपर लेयर के ऊपर सीक्वेंसिंग नहीं कर रहा, तो GRE में बिल्ट इन सीक्वेंसिंग का जो फीचर है वो अवेलेबल है. आप अपने पैकेट्स को एक ऑर्डर के अंदर कर सकते हैं, इनके ऊपर सीक्वेंस नंबरिंग करा सकते हैं GRE से. सो इफ वी टर्न दिस फीचर ऑन वी गेट अनदर पेनल्टी ऑफ 4 बाइट्स. सो इफ यू टर्न ऑन पैकेट सीक्वेंसिंग तो आपका यही हेडर जो है दैट विल गो अप टू 36 बाइट्स. सो अनदर 4 बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट. सो हमारा जो GRE का हेडर है वो बेस हेडर को मिला के विच इज 4 बाइट्स, उसके अलावा another 12 बाइट्स ऊपर टॉप किए जा सकते हैं by turning on these 3 features and we can go up to 16 बाइट्स. That really depends कि हमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए या नहीं चाहिए. मिनिमम 4 बाइट्स का हेडर तो लगेगा ही. So here you can see the header of GRE, और इसके अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या फील्ड्स हैं हेडर की. सो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रही है दैट इज दी 4 बाइट्स हेडर ऑफ GRE, जिसके अंदर C, K और S ये जो बिट्स हैं ये शो करती हैं कि आगे checksum की और सीक्वेंस नंबर के एक्स्ट्रा 4 बाइट्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए. इन फ्लैग से ये पता चलता है. वर्जन के अंदर इट विल ऑलवेज बी 0 विच शोज GRE, और अगर यहाँ पे वर्जन नंबर समटाइम्स कम्स 1 देन दैट इज इक्वल्स टू PPTP प्रोटोकॉल जो माइक्रोसॉफ्ट में यूज होता है. So PPTP itself uses GRE for tunneling. Anyway, this is something we are least concerned with. और जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर ईथर टाइप आ रही होती है जो कि अंदर इनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल है उसकी. So इसका मतलब है कि अगर कोई लेयर 2 प्रोटोकॉल भी आप साथ में इनकैप्सुलेट करें तो उसका क्लू भी यहाँ से हमें पता चल जाएगा.
So checksum, key or sequence number, these are all optional features. If you turn on, you can benefit them. So this is what the role of GRE is in tunneling. So tunneling to pehle bhi ho rahi thi. We were able to ping router 2 from router 1 passing through ISP, where ISP was having no clue of those IPs. We were talking between. But GRE उसी काम को किस तरह से मजीद enhance कर रही है, value add कर रही है ये feature, इस चीज को अब हम analyze करने जा रहे हैं. So how to configure GRE? Same steps. You need to create an interface tunnel, और उसके अंदर आपको tunnel का जो mode है, this time you need to put in GRE. So when you write GRE, then you have three options: IP, IPv6 and multipoint. ये जो दोनों options हैं, they are for P2P tunnels, and this option is for P2M tunnel, point to multipoint tunnel. We will gradually go towards this way, multipoint. So अभी हमें क्योंकि सिर्फ P2P tunnel करनी है और GRE के जरिए करनी है, तो we will use GRE mode IP और GRE mode IPv6. दोनों में क्या फर्क है? अगर आप IP यूज करेंगे GRE का मोड, तो इसका मतलब है आपका जो आउटर हेडर है that will be of v4. Inner does not matter. Inner can be any. This is such a flexible tunneling technology. Inner की तो टेंशन ही नहीं है. It can take IPX, it can take AppleTalk, it can take CLNP, ISO protocols, CDP, anything you can stuff in. But outer header, which is going to be used in transit, यानी transport header, ये उसकी तरफ इशारा है. So when you say tunnel mode GRE IP, your outer header is of v4. Hence, the tunnel source and tunnel destination, will be of v4 in that case. और अगर आप टनल का मोड GRE IPv6 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका आउटर हेडर है वो will be of v6. So in this case, if we go for GRE IPv6, the outer header will be of v6, और जो आपके टनल का सोर्स पॉइंट है और जो टनल का एंड पॉइंट है, that will be of v6. आपका जो ट्रांजिट नेटवर्क है, जो अंडरले नेटवर्क है, वो सारा v6 का होगा in that case. Multi-point we will talk separately. So to start with, we can use tunnel mode GRE IP, this combination. This way हमारा जो outer header है वो v4 होगा. Inner can be any, we can transport any layer 3 protocol within. Tunnel source destination v4 की देंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने पिछली टनल में कॉन्फ़िगरेशन की थी IP टनल में. We need to have an IP address on GRE tunnel interface, same way we had it on plain IP tunnel. और इसकी क्या importance है, that you understand by virtue of our previous lessons. अगर आप ये IP नहीं देते तो आपकी टनल बजाते खुद राउटिंग टेबल का मेंबर ही नहीं बनती, and you will not be able to use that tunnel. ये जो features हैं, these are the optional features. Tunnel key, any value you put on R1, you need to give the same value on R2 as well. Otherwise, your tunnel will not work. Tunnel checksum, this will turn on checksum function in GRE header. So 4 bytes extra, 4 bytes extra. So tunnel sequence datagrams sequencing on हो जाएगी GRE की सतह पे, another 4 bytes. After that, we have an ability of turning on Keepalives. This does not add any extra bytes to the header, but it will enable Keepalive mechanism between 2 points, यानी R1 और R2 के दरमियान जो आप टनल क्रिएट करेंगे, आप इस पर डेटा सेंड नहीं भी करते
तो GRE प्रोटोकॉल बजाते खुद इसके ऊपर कीप अलाइव सेंड करता रहेगा। उन कीप अलाइव्स की जो सेटिंग है दैट इज, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 सेकेंड्स, दिस इज सेकेंड्स। और अगर मुझे 3 कंसेक्यूटिव कीप अलाइव्स मिस होते हैं तो मैं R2 के एंड पे ये सेंस कर पाऊंगा कि मेरा अदर साइड टनल इंटरफेस अवेलेबल नहीं है। सो आई कैन एक्चुअली मेक दिस एंड मार्क्ड एज डाउन। और जब ये टनल इंटरफेस डाउन होगा ड्यू टू दीज कीप अलाइव्स, मिसिंग कीप अलाइव्स, तो R2 के ऊपर जो राउटिंग है दैट कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस स्टेटस चेंज, जो हमने प्रीवियस लेसन में इशू फील भी किया था कि हमने यहाँ से टनल इंटरफेस को डाउन कर दिया था बट द टनल इंटरफेस ऑन द अदर साइड वाज स्टिल अप। सो दैट वाज द रीजन कि हमारे स्टैटिक रूट शिफ्ट नहीं हो रहे थे। डायनामिक राउटिंग नो इशू, बट स्टैटिक राउटिंग में वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स फ्लोट नहीं हुए थे। But now if you turn on keep lives in GRE, you have the ability to sense that there is something wrong on other side. तो आपकी साइड का टनल इंटरफेस भी डाउन हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी helpful feature in terms of switching the path from one interface to the other. तो keep lives on किए जा सकते हैं। So GRE has more features compared to just plain IP in IP encapsulation. So आइए GRE को कॉन्फ़िगर करते हैं। So यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है more or less this is the configuration of GRE as well, except मुझे यहाँ पे मोड चेंज करना है बस। I go in my tunnel interface and I say tunnel mode GRE IP, that's it. This way I can change the underneath carrier protocol functionality। और इस वक्त अब हमारा जो टनल इंटरफेस है 1.2 that is not showing any tunnel mode in running configuration, which means tunnel mode GRE IP is the default setting of any tunnel interface when you create। इसलिए ही वो नजर नहीं आ रही हमें कमांड। अच्छा, अब आप देखिए जैसे ही मैंने इसका टनल मोड GRE किया, ये टनल अप है, ये टनल अप है और इसको इस चीज का कोई अभी पता नहीं है कि अदर साइड पे GRE प्रोटोकॉल चल रहा है या नहीं। एक साइड पर हमने GRE कर दिया है, एक साइड पर IP है, मिसमैच किया हुआ है। So this is IP and other side is GRE. So definitely अब इनके दरमियान मिसमैच है, तो हम इधर से जो टनल करके भेज रहे हैं वो GRE है और इस तरफ GRE का जो लिसनर है इंटरनली iOS के अंदर वो एक्टिवेटेड ही नहीं है। There is nobody to de-encapsulate those packets। वो पैकेट पहुंच तो रहे हैं यहाँ तक, लेकिन उन पैकेट्स को de-encap करके फिर जवाब देने वाला कोई नहीं है, बिकॉज इसको सुनाई ही नहीं दे रहे वो पैकेट्स। तो हम इधर भी आके GRE का मोड एनेबल करते हैं IP, tunnel mode GRE IP। So as soon as we turn it on, we should be able to receive replies, because अब जो हम इनकैप्सुलेट करके भेज रहे हैं वो दूसरी तरफ डी इनकैप करने वाला इंटरफेस मौजूद है। सो एंड रिजल्ट इज सेम, यही एंड रिजल्ट था, हमें कम्युनिकेशन मिल गई थी, कनेक्टिविटी मिल गई थी। यही एंड रिजल्ट हमारा IP टनल का भी था, यही GRE का भी है। बट GRE इज मच मोर वर्सटाइल एज कंपेयर टू द प्रीवियस बेसिक टनल। कैसे वो ग्रेजुअली आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ISP पे चलते हैं और ISP राउटर के अंदर लेट्स क्रिएट एन ACL। ओके, इट इज ऑलरेडी देयर और इसके अंदर हम अब एक प्रोटोकॉल मैच ऐड कर लेते हैं 47 का। no one deny 41 log और let's put permit 47 any
लॉग। तो आप देखिए हमने 47 लिखा बट iOS ने उसको ऑटोमेटिकली GRE में कन्वर्ट कर लिया। सो इसका मतलब हम परमिट GRE यानी लॉग भी लिख सकते थे। सो हम पिंग करते हैं अब R1 से ISP राउटर में, देखते हैं कि ये ट्रैफिक किस प्रोटोकॉल के जरिए पास ऑन होगी। आई थिंक वी हैव नॉट enabled it on the interface yet. Let's turn it on. So we have an ACL on ISP transit router. Let's ping again and see हमें 61,111 से 62,111 की तरफ पैकेट जाते हुए नजर आए और शो एक्सेस लिस्ट करते हैं। Now because the outer header is of IP, it is matching in IP as well. हमें क्योंकि IP का पैकेट तो है, सो इसलिए हमें इसको रीऑर्डर करना चाहिए एंड वी शुड ब्रिंग इट ऑन टॉप ऑफ IP to be able to see matches in GRE. So let's reorder it और इसको हम 40 नंबर लाइन से रिमूव कर देते हैं and we add it at line number 25. Permit GRE any log. So you see, this time we are able to see packets coming in GRE. There is no match in IP. There is nothing in 4.1, which is V6 to V4 tunnel. Rather, we are able to see it in GRE. This is kind of another protocol जिसके अंदर हमारी ट्रैफिक टनल हो रही है। ओके, अब हम GRE टनल के अंदर इसका जो टनल कीप अलाइव का मैकेनिज्म है उसको एनेबल करते हैं। कीप अलाइव 10 फ्री। अब एक एंड पर हमने कीप अलाइव एनेबल कर दिया, दिस एंड is keep alive enabled, but other end is not keep alive enabled. Let's turn on once keep alive feature on this side as well. We have keep alive on both sides. अब हम क्या करते हैं कि we turn down tunnel interface, बल्कि हम राउटर 1 पर डिसेबल करते हैं जो हमने लास्ट लेसन में किया था। और इधर तो इंटरफेस डाउन हो गया था, the interface went down on R1 side, but on R2 it remained up. So let's see on R2 how does it go this time. So the tunnel keep alive is 10 seconds and 3 misses. So you see the tunnel interface went down. अब हमने टनल इंटरफेस डाउन किया था R1 के ऊपर, उसका इम्पैक्ट हमें R2 के ऊपर भी फील हो रहा है। दिस इज ड्यू टू कीप अलाइव जो हमने टनल पे एनेबल किया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फीचर ऑफ GRE, जिसकी वजह से हम राउटिंग प्रोटोकॉल में या स्टैटिक रूट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। If I bring this interface back up as soon as we receive tunnel
keep alive, the tunnel will come up. Any single keep alive message received by this side will bring up the tunnel. So you can see that the tunnel came up. अब ये keep alive की command हम रहने देते हैं इंटरफेस में, and I take this tunnel back to mode IP. We are back in IP tunnels. Tunnel mode is IP. So let's check the tunnel. Tunnel is working fine. अब हम tunnel interface down कर देते हैं इधर का. The tunnel interface is down on R1 side, and we keep an eye on the tunnel interface on R2. Remember, this time the tunneling protocol underneath is IP, which is protocol number 4. अगर हम यहाँ ISP में एनालाइज करें तो IP में 20 मैचेस हैं. Let's ping again. In fact, the interface is down, or we just want to wait to see any impact on tunnel 2.1, but इसका कोई impact आएगा नहीं router 2 की तरफ. Although the tunnel interface is no more there, tunnel 2.1 will remain up forever. बेशक आपने keep alive की command दी हुई है, but it is not working. This only works when the mode is GRE. तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हम देख सक रहे हैं between plain IP and GRE. You can see the still tunnel interface is up. हम tunnel mode GRE IP कर देते हैं वापस, और इधर भी. So the tunnel interface is down on this side. So you can see कि जैसे हमने टनल मोड GRE किया है, इस साइड के टनल इंटरफेस ने कीप लाइव्स के ना आने की वजह से सेंस कर लिया कि अदर साइड पे कोई इशू है, एंड दिस इंटरफेस वेंट डाउन. तो ये थे GRE में कीप लाइव्स. अच्छा जी, अब एक और चीज हम एनालाइज करते हैं GRE में. Tunnel interface on R1 is up and it should come up on R2. Okay, so we have tunnel re-established और हमारी tunnel work भी कर रही है. अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हमने अपनी टनल इंटरफेस के ऊपर, आपके इल्म में है प्रीवियस लेसन में हमने V4 IP भी दिया था और V6 IP भी दिया था. दोनों IP दिए हुए. जब हम पिंग करते हैं दूसरी साइड पर V4 को, तो हम टनल को इनपुट देते हैं V4 की, और जो आउटर हेडर है वो तो वैसे ही V4 का है क्योंकि हमने टनल मोड GRE IP किया हुआ है, और टनल मोड GRE IP के अंदर जो आउटर हेडर है दैट इज गोइंग टू बी V4. With this command, outer header is going to be V4. Inner, जब मैं V4 टारगेट को पिंग करता हूं तो V4 होता है. अब मैं V6 टारगेट को पिंग करूंगा without changing anything. I will keep it at GRE IP, but I am going to ping on the other side V6 IP. From here I will write FEC0. अदर साइड को पिंग कर रहे हैं हम. V4 भी पिंग होता है
और अब हम पिंग करते हैं FEC0:10::2. So my side is .1 and the other side is .2. So you can see we are able to ping regardless of the input restrictions. हम V4 से पिंग करें तो भी सेम टनल वर्क कर रही है, हम V6 से पिंग करें तो भी सेम टनल इंटरफेस वर्क कर रहा है। और अगर ISP राउटर में देखें तो GRE में 96 मैचेस हैं, लेट्स कीप एन आई ऑन इट। और मैं V4 से पिंग करता हूँ 5 पैकेट्स, इट शुड गो अप टू 101। रिटर्न पैकेट्स भी आ रहे हैं। सो ये वाले काउंटर हमारा इंक्रीज हुआ, कीप लाइव पैकेट्स भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये काउंटर इंक्रीज होता रहेगा। You see, we have keep lives, that's why this is increasing as well. Anyway, मैं अगर यहाँ से V6 से पिंग करूं तो भी ये GRE में से ही गुजर रहा है। तो GRE is that flexible. It is taking input of V4 as well as V6, same tunnel. Plus अगर मैं इस टनल इंटरफेस के ऊपर CDP इनेबल करूं, which is working on layer 2, so we have turned on CDP, which is Cisco's protocol to discover neighbors. We have turned it on. दोनों अतराफ, और अब शो CDP neighbors करें, you can see that R2 is my neighbor over tunnel interface. So you know what does it mean? इसका मतलब ये है कि over the internet R1 is in Lahore and R2 is in London. तो R1 और R2 को यूं लग रहा है जिस तरह वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। CDP is traveling between them. Whereas यही चीज जब IP to IP टनल में हमने करने की कोशिश की थी तो वो टनल अपने अंदर स्टफ नहीं कर सकती IP पैकेट के अलावा किसी भी और पैकेट को। So GRE allows you to encapsulate anything in IP, any protocol in IP. Okay. So हमने दो चीजें देखी, एक कीप लाइव देखा और हमने बिहेवियर देखा GRE का कि by just configuring a tunnel source and destination we were able to encapsulate any protocol inside GRE. V4 was going, V6 is going and CDP packets are going. अच्छा जी, अब हम before we turn on the extra features in GRE, let's try to understand the MTU thingy और उसके बाद फिर हम फीचर्स को भी ऑन करते हैं और उसका साथ साथ MTU पर इम्पैक्ट भी देखते हैं।